हम आगे चल रहे हैं बेटा the next method which is horizontal angle. So let's go. Position circle by horizontal angles. Horizontal angle is the smaller angle, not the reflection of the observer. This means horizontal angle to us, its value cannot be more than 180 in any case. Horizontal angle subtended by a pair of objects at the observer depends on two things. One, the distance between the objects, and two, it depends on the distance or the range of the observer from the baseline, which is the segment joining the two objects. The horizontal angle on the ship is obtained by either sextant, in that case we refer to that as horizontal sextant angle, or it can also be obtained by difference between the bearings of the two objects. Okay, so beta just go through these points comfortably one by one. Let me know any doubts coming at any of the points. Bearings of the two objects. If horizontal sextant angle is available. Beta, is the sound coming okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay beta, okay. It must be corrected for index error to convert to horizontal angle. Horizontal angle will be equal to horizontal sextant angle plus minus index error. Off the arc, index error would be plus, and on the arc, index error would be minus. Horizontal angle by bearings is obtained by taking the difference between the bearings of the two objects. Both bearings need to be necessarily of the same type, so please be careful. That is, both may be gyro bearings, or both may be compass bearings, or both may be even relative bearings taken with respect to ship's head, or both may be two bearings. However, if both happen to be two bearings, then we can use them as PL, and there will be no need to deploy this concept of position circle. The difference in the bearings is greater than 180 degrees. Horizontal angle will be 360 minus difference. That means our horizontal angle in no case can be more than 180 degrees. So beta, just go through these points one by one. Let me know if doubts coming anywhere. Let's go. The biggest advantage of this method is that this can be deployed when we have the bearings by gyro, compass, or ship's head, and we do not know the gyro or the compass error. Now we run through the procedure to draw the position circle by horizontal angles. First thing would be to obtain the horizontal angle for the pair of objects. Two would be to get the complement of the horizontal angle, that is 90 minus horizontal angle. Next would be to draw the baseline on the chart, that is the segment joining the two objects whose horizontal angle is in question. Establish to which side of the baseline does the ship's position exist. Now it's very, very important for this method that once you draw the baseline, you take a pause, decide which side of the baseline does the ship exist.
Now, in some cases, it may be quite straight and simple that on one, if you have landmass or non-navigable waters on one side, then that side can be ruled out. However, there can be situations in which you may have navigable water on both sides of the baseline. The gyro or the compass bearings of the objects can then be used to figure out which side of the baseline does the ship lie. Again, to reiterate that it's one of the most important parts of this process to establish which side of the baseline does the vessel exist. Draw the angle of 90 minus horizontal angle at both ends of the baseline. Now, which side of the baseline it has to be drawn? We'll see that because you can draw these on either side of the baseline. If the horizontal angle is less than 90 degrees, then this angle of 90 minus horizontal angle is to be drawn on the side of the baseline to which the ship's position exists. That means towards the position of the vessel. If horizontal angle is greater than 90 degrees, then this 90 minus horizontal angle value is to be drawn on the side of the baseline that is opposite to which the ship's position exists. So this particular method has these few important things which you'll have to keep in mind. The point where the arms of these angles intersect is the center of the position circle. From the center of the position circle so obtained, the end of the baseline, either end of the baseline shall form the radius of the position circle. Just go through these points beta one by one. Let me know your doubts. Beta, your voice is very, very low. Can you repeat? Okay, I will show you actually this procedure on the chart. So maybe once you see. Baseline. What is the doubt, beta? Beta, you can type it out in the chat box. ये देखो बेटा, baseline on the chart is the segment joining the two objects. जो हमने हॉरिजॉन्टल एंगल निकाला है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो उस लाइन को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं. क्लियर? Okay, let's see it on the chart. Whatever doubts you have will get sorted out. Let's see. In fact, this particular slide has the entire stepwise process what we follow to draw the position circle. So you can take a screenshot of this particular slide and save on your device. हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे चार्ट पे एंड इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So you can take a screenshot and save it on your device as HSA, horizontal sextant angle. डन बेटा, चलें आगे.
Yes, Yes, sir. sir. Okay. We shall see how to implement this procedure through a simple example. Following bearings were observed from a vessel at anchor: old head of Kinsale 242 degrees gyro, Roche's Point 290 degrees gyro, Ballycotton Island 037 degrees gyro. Find the anchor position and the error of the gyro. So beta, pick up your calculators. Let me know what is the horizontal angle between Kinsale and Roche's Point. So 048. Very good, beta. Very good. So this is the horizontal angle between Old Head of Kinsale and Roche's Point. Now also tell me what is the horizontal angle between Roche's Point and Ballycotton. 253. How much, beta? So 253. Everybody agrees? 107, sir. Very good. So beta, you remember 901. it cannot be greater than 180. So if you get a horizontal angle more than 053. 180, you subtract it from 360, right? Yes, sir. Very good. So let's proceed ahead. सर हमने किन्सेल और बेली कॉटन को क्यों नहीं लिया सर? ओके, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ. Obviously, in this case, since the gyro error is not given to us, we cannot use the concept of cross bearings. So we could probably look at deploying the process of position circle by horizontal angles. Let's first identify these landmarks. Now, this is Old Head of Kinsale, this is Roche's Point, and this is Ballycotton Island. Then we make pairs. Now, if you have three objects, you can make three pairs, one pair between these two objects, another pair between these two objects, and the third pair between these two objects. However, to keep the plotting simple and avoid crisscrossing of the plot, it is advised that you pair the middle object with each of the other two objects. What we mean is, in this case, Roche's Point is the middle object you can see on the chart lying between the two. So we can form two pairs, one between Old Head of Kinsale and Roche's Point, and another between Roche's Point and Ballycotton Island. बेटा क्लियर हुआ? नो सर. ओके, लिसन वंस अगेन बेटा. ये देखो हमारे पास ये तीनों ऑब्जेक्ट चार्ट में आ गए, राइट? अप टू हियर ओके? यस सर. ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा. Old Head of Kinsale, this is Roche's Point, and this is Ballycotton Island. Then we make pairs. Now, if you have three objects, you can make three pairs, one pair between these two objects, another pair between these two objects, and the third pair between these two objects. However, to keep the plotting simple and avoid crisscrossing of the plot, it is advised that you pair the middle object with each of the other two objects. What we mean is, in this case, Roche's Point is the middle object you can see on the chart lying between the two. So we can form two pairs, one between Old Head of Kinsale and Roche's Point, and another between Roche's Point and Ballycotton Island. So बेटा अब क्लियर हुआ? यस सर. हमें जो भी बॉडी होगी सेंटर से उससे दोनों एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. Right. So when you see the three objects on the chart, you will be able to identify कि middle object कौन सा है. हमें middle object के साथ ही HSA के ग्रुप बनाने हैं. Right बेटा? यस सर. अंडरस्टूड सर. Very good. अगर चार पोजीशन होती तो फिर किसको लेते मिडिल? Ask again बेटा. सर अगर 3 की जगह 4 लैंडमार्क होते हैं तो फिर किसको?
ओके, 4 लैंडमार्क आएंगे नहीं बेटा, देयर विल ऑलवेज बी 3, आइदर 2 और 3। अगर 2 लैंडमार्क होंगे तो सिर्फ एक पोजीशन सर्कल आएगा, और अगर 3 लैंडमार्क होंगे तो फिक्स आ जाएगी। चौथा लैंडमार्क कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही नहीं। ओके सर। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। Now, for the first pair between Old Head of Kinsale and Roche's Point, the horizontal angle is 48 degrees because the difference between their bearings is 48 degrees. 90 minus 48 gives you 42 degrees. The second pair, that is between Roche's and Ballycotton Island, the horizontal angle is 107 degrees more than 90 degrees, and 90 minus horizontal angle gives us minus 17 degrees. Now we deploy the process that we have learned to draw the position circles. So first, for Roche's Point and Old Head of Kinsale, we draw the baseline. Now then we establish on which side of the baseline does the vessel lie. In this case, this side is landmass. Obviously the ship would be on the sea side, so the vessel lies on this side of the baseline. Now, with respect to baseline, both at Old Head of Kinsale and at Roche's Point, we have to draw this 90 minus horizontal angle, that is 42 degrees. So we will draw these angles at both ends of the segment of the baseline. Where these two intersect at C1, this forms the center of the position circle. ओके, सो बेटा अब तक जो प्रोसीजर हमने किया है चार्ट पे, इसमें जो भी डाउट्स हैं आस्क मी, हैव ए लुक एंड लेट मी नो योर डाउट्स। सर इसमें जैसे इसमें हमें बताया था कि हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड पे हम ड्रॉ करेंगे, हमारी बेस लाइन के कौन सी साइड पे ये एंगल्स ड्रॉ होंगे। इस केस में तो हमारे पास लैंड है पीछे, हमें क्लियर है। अगर मान लो दोनों साइड से नेविगेबल डेप्थ होती तो मैं कहाँ जाता सर, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ओके बेटा, ओके, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये बेस वाला एक प्लॉट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोनों साइड में नेविगेबल वाटर आ जाए तो हमें कैसे पता करना है कि हमारा शिप किस साइड में होगा। आई विल टेल यू। ओके सर। Sir, what is the reason subtracting the horizontal angle from 90? व्हाट इज द रीजन बेटा? Yes, sir. Why are we subtracting it from 90 degrees? ओके बेटा, इसका रीजन ये है कि इट इज द पार्ट ऑफ द मेथड। और ये पार्ट ऑफ द मेथड क्यों है? अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो ये ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि कोई भी कॉर्ड जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल जनरेट करेगी, ओके, दैट वुड बी डबल द एंगल जनरेटेड एट द सेंटर। ये बहुत हैवी हो जाएगा अगर मैं इसकी डिटेल में चला जाऊं। ये 10th क्लास की ज्योमेट्री में आता है बेटा। सो हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बेसिस पे ये मेथड बनाया गया है। सो हमें तो बस इस मेथड को फॉलो करना है। Okay. ओके बेटा? Yes, sir. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? ओके सर जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि इसमें या तो हमें 2 बेयरिंग्स दी होंगी या 3 बेयरिंग्स दी होंगी। राइट। यस सर। तो अगर मेरे को 2 बेयरिंग्स दे रखी होंगी तो चलो 3 बेयरिंग में तो मैं क्लियर समझ सकता हूँ कि ये HSA का क्वेश्चन है। अगर 2 बेयरिंग दे रखी हैं तो उसमें मैं 2 पॉइंट बेयरिंग नहीं लगाऊंगा सर। बेटा 2 पॉइंट बियरिंग क्या होता है? सर अगर मेरे को दो लाइट हाउस की बेयरिंग दे रखी है, मैं बेयरिंग ड्रॉ करूंगा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरी पोजीशन आ जाएगी सर। राइट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, आप ऐसे ही करोगे। तो आप कह रहे हो जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को अगर किनसे और रोशेस पॉइंट की अगर बेयरिंग दे रखी होती तो मैं दोनों ड्रॉ करके और इंटरसेक्शन से अपनी पोजीशन ही निकाल सकता सर। बिल्कुल सही बेटा। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम ये 242 और 290 की बेयरिंग ड्रॉ करें तो हमारी पोजीशन आ जानी चाहिए सीधा, इजंट इट? यस सर। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, ये है बेटा क्वेश्चन। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बियरिंग कौन सी बियरिंग है?
gyro है। अगर मान लो gyro सर bearing और ट्रू बेयरिंग दी होती, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि gyro bearing कैन बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट डायरेक्टली? नो सर, नो। एरर ऑफ द gyro हमें पता है, नो सर, इन दिस वो केस वी नहीं कैन नॉट, पता है। लेट्स से द क्वेश्चन गिव्स मी ट्रू बेयरिंग और द gyro error itself, तो मैं यूज कर सकता हूँ ना सर? वेरी गुड बेटा। अब लेट्स गो लिटिल बिट मोर बैक। अब हम यहाँ मेथड पे आ जाते हैं, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था। सो यहाँ पे बेटा आप ये चीज को रीड करो, बोथ बियरिंग नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप। ये ट्रू के आगे देखो क्या लिखा है। यस सर, क्लियर है ओके, सर। सो अगर हमें Yes. ट्रू बियरिंग मिल जाए, चाहे वो डायरेक्टली दी गई हो या हमें कंपस बियरिंग और कंपस एरर दी गई हो, तो हम तो सीधा उनको प्लॉट करके अपनी पोजीशन निकाल लेंगे, फिर हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। ओके ओके सर, बेटा, अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। और बताओ बेटा, और कोई डाउट्स आ रहे हैं अभी तक? हम यहां तक पहुंचे हैं अभी। नो सर। Very good. So everybody will be able to plot this center C1. सर Yes, जो sir. 42 डिग्री की सर जो लाइन मारी है, वो दोनों वो बेस लाइन है जो दोनों आइलैंड सॉरी जो दोनों बेरिंग पॉइंट्स को जो मीट कर रही है। ये है बेटा बेस लाइन जो दोनों लाइट हाउस को ज्वाइन कर रही है। यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, दिस इज द बेस लाइन। तो ये अपन ने हमने सर 42 डिग्री की मार दी है इस पे। हमने इस बेस लाइन पे 42 डिग्री का एंगल बनाया है, ये 42 डिग्री का एंगल है बेटा। ओके सर, ओके सर। ओके, और ये वहां हमने से शिफ्ट, दोनों से 42 मार दिया। यस बेटा, हमने 42 डिग्री का एंगल बनाया है। और किस तरफ बनाया है? हमने इसे शिप की तरफ बनाया है। शिप भी सी में होगी, हमने इस एंगल को भी शिप की तरफ ही बनाया है। शिप की तरफ ओके क्यों बनाया है? हम तो दूसरी तरफ भी बना सकते थे, हमने शिप की तरफ क्यों बनाया है इसे? सर, बेरिंग तो हम शिप की ले रहे हैं ना। लैंड है ना, नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। किसी केस में लैंड है। हमें इसे शिप के ऑपोजिट साइड में भी बनाना पड़ सकता है। ये देखो बेटा, ये हम आ गए मेथड पे। ये देखो बेटा क्या लिखा है जहां मेरा कर्सर है, हॉरिजॉन्टल एंगल लेस देन 90। तो आगे क्या लिखा है, पढ़ो। Is drawn on the chart that side of baseline of which ship position exists. राइट। और अगर हॉरिजॉन्टल एंगल 90 से बड़ा हो जाए, हॉरिजॉन्टल एंगल ग्रेटर देन 90, तब कहां ड्रॉ करना है? That is opposite side. वेरी गुड, इसे याद रखना है बेटा। Okay sir. ओके, लेट्स गो बैक टू द प्लॉट। सो और डाउट बताओ बेटा मुझे, और कोई डाउट आ रहा है? No sir. Thank you. वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। So with this C1 as the center and C1 to old head of Kinsale or C1 to Roche's point, either one of them, they'll be same as radius. We draw the position circle and we draw it only on the side of the segment or the baseline on which the ship lies. This is how we draw it, only on this side, and we don't have to draw this full circle because the vessel cannot be on this arc in any case. सो बेटा बन गया पोजीशन सर्कल, एनी डाउट? सर ये सेंटर C1 तो लिया इधर, इसका सेंटर C1 पर है बेटा। एंड रेडियस क्या लिया सर इसका? बेटा C1 से लेके कोई भी लाइट हाउस, ओके, दोनों में से कोई भी लाइट हाउस जिनके बीच में सर। हमने एंगल बनाया है, दैट इज द रेडियस। ओके, Okay, so we have one position circle. Let's proceed ahead now. Now let's draw the position circle between Roche's and Valley Cotton pair. So we draw the baseline for Roche's and Valley Cotton Island.
Now, please see in this case also the ship is on the sea side. It cannot be on the land side. But here the horizontal angle is more than 90 degrees. In the previous case, horizontal angle was less than 90. So these complement angles were drawn on the side on which the ship lies. In this case, the horizontal angle is 107, or the 90 minus horizontal angle came minus 17. So this 17 degrees will be drawn on the side opposite to which the ship exists. In this case, the ship exists on this side of the red baseline, so 17 degrees would be drawn on the opposite side, like this. We get C2 as the center of the position. With C2 as the center and its distance either to Roche's Point or Bellycotton Island acting as radius, we draw the position circle only on the side on which the ship exists. The ship lies on this side of the baseline, so the position circle is drawn only on this side, that is the sea side. So the blue is one position circle, the red one is the second position circle. Both are of simultaneous observations. Wherever they intersect, obviously that is the anchor position of the vessel. Okay, beta. Now have a good look at the diagram, at the plot. Let me know your doubts. Sir, can you please explain this C2 once again, sir? ओके बेटा, C2 में बेटा कहाँ पे डाउट आ रहा है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आ रहा है? So like when we are joining this C2 line from this Roche Point and this Belly Cotton, so if we can mark it on the land as well on the chart, there is no problem. आप बेसलाइन की बात कर रहे हो बेटा? No sir, the lines which we are making, this angle, the 17-degree angle which we are making and making the point C2. Right. This we are making on the land, na sir? Yes, that's right beta. So, it can go on land beta, there is no problem. It can go on land also. This is the center of our position circle. The ship will not be here. Okay sir. Okay sir, thank you. Okay. सर हाँ बोलो बेटा. ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? माइनस 17 से क्या पता लग रहा है हमें? ओके बेटा, जब भी कभी ये एंगल माइनस में आएगा ना, 90 माइनस HA की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब है कि जिधर भी शिप है उसके ऑपोजिट साइड में उसे बनाना है. देखो हमने बेस लाइन पे जब ये 17 डिग्री का एंगल बनाया तो हम शिप के ऑपोजिट चले गए. ऑपोजिट क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे माइनस था. ओके, यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा था, 107 था. पहले वाले केस में देखो माइनस नहीं था, पहले वाले केस में प्लस 42 था. तो हमने 42 को उस डायरेक्शन में बनाया जिस डायरेक्शन में हमारा शिप है. क्लियर हुआ बेटा? ओके सर. यस सर. यस सर. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर अपोजिट में बनाएंगे तो हमेशा मतलब माइनस में नहीं आएगा उस केस में, तो क्योंकि हमेशा 90 से बड़ा होने वाला है. फिर से पूछो बेटा, यू गॉट ब्रोकन. सर जो अपोजिट वाला केस है तो उसमें तो हमेशा मतलब माइनस में ही आएगा, तभी अपोजिट बनेगा. पॉजिटिव आएगा तो मतलब एक उसी डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट नहीं बनेगा. बिल्कुल सही है बेटा. अगर 90 माइनस HA पॉजिटिव आएगा तो जहाँ पे शिप है हम उधर ही एंगल बनाएंगे. अगर 90 माइनस HA नेगेटिव में आएगा तो हम शिप के ऑपोजिट साइड में एंगल बनाएंगे. ओके सर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड. हमारे पास पोजीशन आ गई है, अब हमें जायरो एरर भी ढूंढनी है. Now to get the gyro error, we read off the true bearing of any one of these objects or points
from the chart. It is advised that we read off the bearing of the farthest object so that the error does not get amplified. So in this case, please read off the true bearing of old head of Kinsale from the anchor position, and you can do it on the chart by putting your parallel ruler, transferring it to compass rose, and reading of the true bearing of the old head of Kinsale. Now comparing the true bearing of the old head of Kinsale read off from the chart with old head of Kinsale bearing of 242 degrees gyro provided in the question, that can give us the gyro error as required by the question. So in this case, we have dealt with two situations. One in which the horizontal angle was less than 90 degrees, that is the blue position circle, and the other was where the horizontal angle was more than 90 degrees, the red position circle. Okay, so beta, anything which is in doubt? No, sir. सर मेरा नेट स्टक हो गया था सर, वो ना बाद में वो दोनों वो सर क्या बोलते सर्कल जहाँ पे मीट कर रहा है वो एंकर पोजीशन होगी, उसके बाद से समझ में नहीं आया सर बात, आपने कुछ और बोला क्या? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, अभी बता देते हैं बेटा। ये लो एंकर पोजीशन आ गई हमारी, अब सुनो आगे। Ruler, transferring it to compass rose and reading of the is the anchor position of the vessel. Now to get the gyro error, we read off the true bearing of any one of these objects or points from the chart. It is advised that we read off the bearing of the farthest object so that the error does not get amplified. So in this case, please read off the true bearing of old head of Kinsale from the anchor position, and you can do it on the chart by putting your parallel ruler, transferring it to compass rose, and reading of the true bearing of the old head of Kinsale. Now comparing the true bearing of the old head of Kinsale read off from the chart with old head of Kinsale bearing of 242 degrees gyro provided in the question, that can give us the gyro error as required by the question. समझ में आ गया बेटा? ओके सर, अपने को सर जो एंकर पोजीशन जो आई है उससे जो भी लाइट हाउस की बेयरिंग ली थी उससे बेयरिंग सॉरी उसकी उसे देखना है सर अपना क्या बेयरिंग बन रही है और उसको कंपेयर करना है जायरो उसकी जो पहले गिवन जो वो थी हेडिंग उससे। वेरी गुड बेटा, राइट। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, और बेटा एग्जैक्टली फॉर दिस पर्पस डाउट है। हाँ बोलो जी, बोलो डाउट। सर आप इसमें आप वहाँ वो पोजीशन से लेके और जो ये 42 लिखा हुआ है नीचे दूर वाला, ये जो लाइन है इसको पहला रूलर से हम कंपास पे मेजर करेंगे। हाँ बेटा, ये बोलना चाह रहे हो ना यहाँ सर? से लेके यहाँ तक बेटा इसको। तो सर कंपास रोज में दोनों तरफ डायरेक्शन दी है, कौन सी वाले लेंगे हम लोग? अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर शिप आपका यहाँ पे है तो लाइट हाउस किधर दिखेगा? इस तरफ दिखेगा या नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा या साउथ वेस्ट में दिखेगा, बताओ? नॉर्थ वेस्ट में। बेटा अगर एंकर पोजीशन यहाँ है तो लाइट हाउस तो इधर है ना? लाइट हाउस कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगा? नहीं सर समझा नहीं मैं। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, फिर से समझो बेटा, आप इस जगह पे हो, आपका शिप यहाँ पे है, ठीक है? आप ब्रिज में खड़े हो और आप ये लाइट हाउस को देख रहे हो। यहाँ पे एक सुंदर लड़की हाथ हिला रही है आपको, वो आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहाँ दिखाई देगी बेटा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ना? देखा, आप समझ में आ गया।
तो बेटा जब आप कंपास रोज पे दो डायरेक्शंस को देखोगे तो कौन सी वाली पिक करनी है? लो बेटा, नेट उड़ गया तुम्हारा। साउथ वेस्ट यूज करेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, जिसका तो डाउट साउथ था वेस्ट वो वही है। देख। हाँ बेटा, हाँ समझ में आया बेटा। बियरिंग का मतलब आसान भाषा में समझो कि कौन सी डायरेक्शन में लाइट हाउस है, ये मतलब होता है बियरिंग का। ओके सर। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपने समझ लिया है। That can give us the gyro error as required by the question. So in this case, we have dealt with two situations. One in which the horizontal angle was less than 90 degrees, that is the blue position circle, and the other was where the horizontal angle was more than 90 degrees, the red position circle. Now there can be some special cases wherein horizontal angle happens to be exactly 90 degrees, neither more than 90 nor less than 90. In this case, the baseline joining the two objects forms the diameter of the circle. So if it is the diameter, the center of the segment becomes the center of the circle. Measure the baseline with scale to find its midpoint. The midpoint acts as the center, and from midpoint to either of its end will become the radius, and you can draw the circle on the chart. Now this is based on the principle that the diameter of a circle subtends an angle of 90 degrees at any point on the circumference of the circle. So beta, just go through these points and let me know any doubt coming anywhere. सर सेंटर ऑफ द सर्कल तो वो C1 था ना, तो ये बेस लाइन का मिड पॉइंट कैसे हो सकता है अभी? बेटा अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, हॉरिजॉन्टल एंगल, राइट, तो हमें C1 निकालने के लिए सबसे पहले 90 माइनस HA करना पड़ता है ना। तो इस केस में 90 माइनस HA क्या होगा? फिर वो बेस लाइन में पहुंच जाएगा। 90 माइनस HA 0 हो जाएगा। करेक्ट। सो C1 कहीं बनेगा ही नहीं और कहीं। सो जो भी हमारी बेस लाइन होगी उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे सर्कल का सेंटर बन जाएगा। ओके सर। ओके, और भी पढ़ लो बेटा। लेट मी नो एनी डाउट कमिंग इन एनी ऑफ द पॉइंट। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। हमने एक स्पेशल केस देखा, HA इक्वल टू 90। लेट्स नाउ सी सम मोर स्पेशल केसेस। We could have situation wherein horizontal angle is equal to 0 degrees. That अब बेटा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि अगर हॉरिजॉन्टल एंगल दो लाइट हाउस के बीच में 0 डिग्री हो जाए तो ये कौन सा केस बनेगा? सर ट्रांसिट बेयरिंग। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट विल बी ए केस ऑफ ट्रांजिट बियरिंग, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक ही बियरिंग में आ जाएंगे और ये ट्रांजिट बियरिंग बन जाएगी। हमें इस केस में PL मिलेगी। वेरी गुड। means the bearing of both the objects is same. This becomes case of transit bearings. Thus, if horizontal angle is 0,
It shall provide us a PL by transit bearing and not a position circle. Also, if the horizontal angle is 180 degrees, means the bearings are separated by 180 degrees. So horizontal angle 180 हो जाएगा तो क्या केस बनेगा? Opposite bearing. Very good, beta. It will be a case of opposite bearing. And the objects are on reciprocal bearing. This becomes a case of opposite or reciprocal bearings. In this case, we get a PL, which is the segment joining the two objects like opposite bearings and not a position circle. So we have dealt with all the possible cases, chances or cases of horizontal angle. Horizontal angle less is equal to 0, horizontal angle less than 90, horizontal angle equal to 90, horizontal angle greater than 90, and horizontal angle equal to 180. And we have already said that horizontal angle in no case can be more than 180. So that covers all possibilities as far as position circle by horizontal angles is concerned. Now we discuss position circle by the raising or first sighting of lights and dipping or last sighting of the light. Under this concept, we use the maximum distance or range at which a light is first seen when closing in or last seen when the vessel is moving away from it. Circle is drawn with the position of the light on chart as its center and the first or the last sighting distance or range as its radius. For any light to be visible to the observer, it needs to simultaneously satisfy the following conditions. It must be within the geographical range of the observer, and two, the observer should be within the luminous range of the light, referred to as present luminous range. So just go through these points one by one. Let me know any doubts coming in the mind. सर ये फर्स्ट सीन और लास्ट सीन वाला पॉइंट तो एक ही रहेगा ना, मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगी ना? हाँ बेटा, अगर आप लाइट हाउस की तरफ जा रहे हो तो इट विल बी फर्स्ट सीन, और अगर आप उससे दूर जा रहे हो तो इट विल बी लास्ट सीन. दोनों की रेंज एक ही रहेगी. Okay, beta, very good. So let's proceed ahead and see this in detail. So it's important that first we understand the geographical range and the present luminous range. Geographical range of a pair of observer and the object depend on their respective heights. As you can see in this diagram, we have a light of this much of height. Now it has its range of sea horizon, which is this much of distance. What does it mean? It means that if there is an observer at sea level, the maximum distance at which the observer at sea level can see this light would be this much. Likewise, we have an observer with this much of height of I, and his range of sea horizon spans up to this point. It means any object which is at sea level, the maximum distance at which the observer can see that object at sea level would be this much. Now the sum total of range of sea horizon of the object and range of sea horizon of the observer is what is called as the geographical range for that particular pair. It obviously depends on the height of the object
and it also depends on height of eye. This geographical range can be calculated in nautical miles by a simple formula 2.095 into square root of height of the eye or height of the observer in meters and plus 2.095 into square root of height of light in meters. The geographical range so obtained would be in nautical miles. So please be careful about the units. Geographical range shall be in miles. Heights have to be in meters. That's how this factor of 2.095 shall be justified. सो बेटा एक तो ये जो फॉर्मूला है इसे आप अपनी नोटबुक में ना इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके नोट कर लो. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर जियोग्राफिकल रेंज. और दूसरा ये जो डायग्राम है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी डिवाइस पे सेव कर लेना है. दिस गिव्स यू द डायग्राम फॉर द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ ए ऑब्जेक्ट. इसके बाद व्हेन यू डू दीज टू थिंग्स, have a look at this diagram. Let me know any doubts coming in your mind. The range of sea horizon of observer, this will be affected by the tides. So while applying, we will be using it. I didn't get you better. The Sir, range of the range of sea horizon of observer, this will be affected by the tide height, right, sir? okay. Tides will affect to this, but this range of sea horizon of light, this is, I mean, already as per the mean high water spring. So while our using our height, we will always apply the tide correction if given. Okay बेटा. What you are trying to say is कि जो ये height of the light है ये tide condition के साथ change होती रहेगी, correct? सर एक्चुअली हमारा ऑब्जर्वर का हाइट है, बिकॉज वो तो हम मीन हाई वाटर स्प्रिंग से ले ही लेंगे, रेफरेंस है, लेकिन हमें तो हमारे लिए तो टाइड करेक्शन लगाना ही पड़ेगा. नहीं बेटा, जितना ऑब्जर्वर ऊपर जाएगा उतना ही सी लेवल भी ऊपर जाएगा ना, तो रेंज तो उतनी ही रहेगी ना, ऑब्जर्वर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. ओके सर. हाई टाइड में ऑब्जर्वर भी ऊपर चला जाएगा और जो ये सी लेवल है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो रेंज तो उतनी की उतनी ही रहेगी. हाँ जी सर, ठीक है. ओके. हाइट ऑफ लाइट में ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका वाटर लेवल चेंज होगा तो लाइट की हाइट भी चेंज हो सकती है. लेकिन इन क्वेश्चंस में टाइड की वेरिएंस की वजह से जो लाइट की हाइट में चेंज आता है हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं. ओके. हम तो सीधा जो भी चार्टेड हाइट दी होती है उस चार्टेड हाइट को पिकअप कर लेते हैं और इस फॉर्मूला में यूज़ कर देते हैं. इन क्वेश्चंस में यूजुअली हमें टाइडल लेवल नहीं दिया जाता, सो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो लेवल है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग है और जो हाइट ऑफ लाइट चार्ट में दे रखी है उसी को यूज़ करना है. ओके सर. ओके. सर इसमें विजिबिलिटी का कुछ इफेक्ट होगा सर, जैसे कि फोग वगैरह है उससे? नहीं बेटा, विजिबिलिटी का इफेक्ट हम ल्यूमिनस रेंज के अंदर देखेंगे. अभी तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी हो तो हमें कोई भी लाइट कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी. ओके सर. और डाउट बताओ बेटा. वेरी गुड बेटा. सो अब आपको जियोग्राफिकल रेंज का फॉर्मूला पता है, आपने इसे नोट कर लिया है. और अगर मैं आपको ऑब्जर्वर की हाइट ऑफ आई बता दूं और लाइट हाउस की हाइट बता दूं तो आप उसकी जियोग्राफिकल रेंज को निकाल सकते हो. लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ.
present luminous range of a light, the maximum distance at which a light can be seen by the observer, depending on the brightness or the luminous intensity of the light and the transparency of the intervening medium, which in this case is the atmospheric visibility. Luminous intensity, as far as navigators are concerned, is taken care of by what we call as the nominal range. And the nominal range is the charted range of lights on the present day navigational charts. Atmospheric visibility at sea can be assessed or estimated by the navigator. In examination conditions, the visibility has to be provided in the question. Then we need to understand a term, nominal range of a light. It is the distance at which a light can be seen because of its luminosity under meteorological visibility conditions of 10 nautical miles. It is this nominal range which is charted on today's or present day navigational charts. PLR, that is present luminous range, is obtained by using a luminous range diagram wherein you enter with nominal range and atmospheric visibility. So beta, we are now discussing about the luminous range. So just go through these points one by one, take your time. Let me know any doubts coming in the mind. सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे सर इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल रेंज? ओके बेटा, अगर बड़े आपने सिंपल तरीके से इसे समझना हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब है। अब बेटा अगर आप कोई लाइट देखते हो, जैसे हमने एक बल्ब लगा रखा है अपने रूम में एंड इट इज़ ए लेट अस से 100 वॉट का बल्ब है, वो 100 वॉट का बल्ब है। अब 100 वॉट के बल्ब की जो लाइट है, अगर आप उसे कंपेयर करो एक दूसरे बल्ब के साथ, दूसरे रूम में आपने 200 वॉट का बल्ब लगा रखा है, तो जो 200 वॉट का बल्ब है वो ज़्यादा पावरफुल है, करेक्ट, उसकी लाइट भी ज़्यादा होगी। यस सर। अब अगर इन दोनों को आप अपने घर की छत पे लगा दो तो ज़्यादा दूर से कौन सा बल्ब दिखाई देगा? सर 200 वॉट। ऑब्वियसली 200 वॉट वाला बल्ब ज़्यादा दिखाई देगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट हाउस के अंदर जो लाइट लगाई जाती है वो कितनी पावरफुल है, दैट इज डिफाइंड बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इज इट क्लियर नाउ बेटा? यस सर। ओके सर इसके रिलेटेड आपके पास कोई डायग्राम है? आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा बिल्कुल, अभी हम जाएंगे ल्यूमिनस रेंज की डायग्राम में और वहां से देखेंगे। तो सर इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल रेंज काउंट करते हैं। ओके बेटा, अब ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ये हमें चार्ट पे नहीं दी रहती, क्योंकि अगर ये चार्ट पे उन्होंने डालनी शुरू कर दी तो चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो चार्ट पे वो हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं देते, चार्ट पे हमें वो लाइट की नॉमिनल रेंज देते हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि लाइट कितनी पावरफुल है, वो हमें ये बताते हैं
कि ये लाइट हमें कितनी दूर से दिख जाएगी, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। यस सर। सो अब ये लाइट कितनी दूर से दिखेगी, इसको बताने के लिए वो एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड विजिबिलिटी यूज्ड इज 10 नॉटिकल माइल्स। अगर 10 माइल की विजिबिलिटी हो तो एक पर्टिकुलर लाइट कितनी दूर दिखाई देती है, उसे उसकी नॉमिनल रेंज बोला जाता है। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? प्रेजेंट डे नेविगेशनल चार्ट की टर्म की यूज हो रही है। बेटा एक बार फिर से पूछो, डाउट क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट डे नेविगेशन ये टर्म स्पेशली। ओके बेटा, जो पुराने चार्ट होते थे ना, लेट अस से 100 इयर्स बैक, 200 इयर्स बैक, उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता था। उनमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होता था, जो हम अभी के लिए छोड़ देंगे क्योंकि दैट इज ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। आजकल के चार्ट्स में नॉमिनल रेंज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए यहां पे ऐसा लिखा गया है बेटा। ओके, सो आगे चलें बेटा। लेट्स गो। This is how the luminous range diagram looks like. You can see on top here, you have the nominal range in C miles. And here on the y-axis on the left hand is the PLR, which is luminous range in miles in prevailing visibility conditions. It can be entered with intensity in candelas, but our charts don't have this. This information is there in list of lights. What you'll get from the chart would be the nominal range. So have a good look at this diagram beta. This is the luminous range diagram. यहाँ से ही हम चार्ट की प्रेजेंट luminous रेंज का पता करते हैं। Okay, let's now see how do we use this diagram. We will take an example on the chart and we will use this. ये डायग्राम भी होने वाला है एग्जाम पर्पस के लिए। ये डायग्राम बेटा आपको एमएमडी में प्रोवाइड की जाएगी। आप जब उनको बोलोगे सर हमें ल्यूमिनस रेंज डायग्राम चाहिए, तो वो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इसको यूज करोगे। इसमें से कैसे फाइंड आउट करनी है रेंज, पता तो नहीं लग रहा। हाँ अभी देखते हैं बेटा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको कैसे फाइंड करनी है। लेट्स सी। So now let's look at drawing a position circle by first or last sighting by through this simple example. Hook headlight was first sighted at 2000 hours in atmospheric visibility of 2 miles. If the height of eye was 12 meters, draw the position circle at 2000 hours. So beta just read the question and give me a minute. I'll be back.
Okay, beta. Sorry for the interruption. There was an important call. So let's continue now. So we have seen this question. Let's proceed. Let's first identify hook head light on the chart. And from there, we pick up its characteristics and we use the information as needed. Now on the chart, here is the hook head light. We pick up its characteristics, and characteristics are here. Flashing 3 seconds, 46 meters, that is the height. 23 capital M is the nominal range, and horn to 45 seconds. So the charted height of the hook head is 46 meters. Nominal range of hook head is 23 miles. Now we learn to calculate the GR and PLR. Now, if you come to this part of it, we have these informations out here. This is the luminous range diagram. So we calculate GR and PLR. Now GR is equal to 2. ओके बेटा, अब बेटा ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। लाइट की जो हाइट है वो 46 मीटर है, ऑब्जर्वर की हाइट ऑफ आई 12 मीटर है। नाउ ग्रैब योर कैलकुलेटर्स एंड लेट मी नो कि इसकी जियोग्राफिकल रेंज कितनी होगी। फार्मूला आपने नोट किया हुआ है, अब आपने मुझे बताना है कैलकुलेट करके। एवरीबडी कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ दिस लाइट। So 21.46 miles. Okay beta, other people, let other people also calculate. Sir, 21.46. Okay, very good. Let's see the solution. Here, this is the luminous range diagram. So we calculate GR and PLR. Now GR is equal to 2.095 square root of height of I, which is 12 meters, plus 2.095 square root of 46, which is the charted height, and we get a GR of 21.5 nautical miles. So that's correct beta, 21.46 rounded off. We usually take the distances to a accuracy of one place after the decimal. So जब हम इसे round off करेंगे, we will get this value of 21.5. Anybody having doubt in this beta? Very good, great. Let's proceed ahead. Now we use this luminous range diagram with this nominal range of 23 miles and visibility of 2 nautical miles given in the question to get the PLR. You can see here from 23 miles we come down to 2 miles visibility curve, and from here we go to the y-axis on the left side, and from here we read off the present luminous range, which is 6.7 nautical miles. So beta, this is how the diagram is used. We enter with nominal range. हमें क्वेश्चन में दिया गया था nominal range is 23 miles. हमने 23 के साथ यहाँ से एंटर किया. We come down to the visibility. Visibility given is 2 nautical mile. 2 nautical mile was the visibility given. ये misprint है बेटा यहाँ पे 5 का. It is actually 2 nautical miles. So 2 nautical mile पे हम यहाँ पे आ गए. फिर we move in the horizontal direction, and ये जो scale है on the left side, यहाँ से हमें हमारी nominal range, sorry, present luminous range मिल गई, which is 6.7 nautical miles. So look at it carefully. Let me know your doubts. Yes sir, there is a question. सर जो नॉमिनल रेंज दी होती है चार्ट पे, वो तो जब दी होती है ना, जब मेरी मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी 10 माइल पे होती है, तो मैं उस पे नहीं देखूंगा लुमिनस रेंज। You mean to say कि हम 23 माइल की जो रेंज है उससे 10 माइल विजिबिलिटी पे देखेंगे? यूजुअली उसका मतलब तो वही होता है ना सर, नॉमिनल रेंज जो चार्ट पे दी होती है। बेटा उसका मतलब है कि अगर 10 माइल की विजिबिलिटी हो
तो ये जो लाइट है ये इस रेंज पे 23 माइल्स पे दिखाई देगी, पर अभी तो 10 माइल की विजिबिलिटी नहीं है ना, अभी तो 2 माइल की विजिबिलिटी है। सर मैं इस क्वेश्चन को इंटरपोलेशन से भी निकाल सकता हूँ क्या? जब मेरी विजिबिलिटी 10 माइल होती है तो मैं 23 माइल पे दिखूंगा, और जब मेरी विजिबिलिटी 2 माइल हो जाएगी तो मैं कितनी नॉमिनल रेंज होगी, और नॉमिनल रेंज को घुसा के फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। वो सेकंड वे हो सकता है सर ये क्वेश्चन करने का? नहीं बेटा, अनफॉर्चुनेटली इसे इंटरपोलेशन से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप जो ये कर्व देख रहे हो ना बेटा, दीज कर्व्स आर नॉट रेगुलर कर्व्स, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम इसे इंटरपोलेशन से भी निकाल लेते, पर ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर आप ये स्केल भी देखोगे तो ये स्केल भी लीनियर नहीं है, 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, 36 और 37 के बीच में बहुत कम गैप है, तो इसे इंटरपोलेशन से नहीं निकाला जा सकता। ओके सर। ओके ओके, और डाउट बताओ बेटा। ओके, ऑल राइट। सो बेटा हमें इस लाइट की जियोग्राफिकल रेंज पता चल गई 21.5 माइल्स, हमें इसकी प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज भी पता चल गई 6.7 माइल्स। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये लाइट हमें कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी? 6.7 miles. Very good beta. So it will be visible at the minimum of the two, which is 6.7 miles. Let's see. So we get GR of 21.5 nautical miles, PLR of 6.7 nautical miles. The light shall be visible to the observer when both the conditions are satisfied. Now both the conditions shall be satisfied at the lower of the two. So at 6.7 nautical mile, both GR and PLR shall be within the geographical range, and it shall also come within the present luminous range. So the first sighting range for Hookhead would be 6.7 nautical miles. So now we can draw a position circle with Hookhead light as the center and 6.7 nautical miles as the radius. And you can see this position circle on the chart. This is the position circle we get. Now, as far as exams are concerned, sometimes they use the word first sighting, last sighting. Sometimes the terms used are raising and dipping. Please do not get entangled into the technicalities of the terms. If you have all the information available, then please calculate both geographical range as well as present luminous range and use the lesser of the two. To calculate geographical range, you need to know the height of eye or height of observer and the height of the object, that is height of the light. Height of the eye has to be either given in the question or could be given on top in the general remarks in the question paper. Height of the light can be used from the chart. On ships, you will have always know your height of eye, which is always displayed in a table at the chart on the chart table against the draft of the vessel. Now, as far as the present luminous range is concerned, you will be able to calculate it in exams if you know the atmospheric visibility and the nominal range. Nominal range in most cases can be obtained from the chart from the light characteristics. Visibility needs to be given in the exams. In an exam scenario whereby you may not have sufficient information to calculate both GR and PLR. Now in that case, please calculate the one which you are able to calculate, and without worrying about the technicality of the terms dipping or raising, sighting, first sighting, last sighting, use the range that you are able to calculate, and this you are using under the assumption that the other one is definitely more than what you have calculated.
So I hope now you'll have no confusion as to which range to use if the term used is raising or dipping, and which one to use if the term used is first sighting or last sighting. So beta, this completes our question on PLR, geographical range, first sighting and last sighting. So जो भी डाउट अब आपके माइंड में आ रहे हैं, you can ask me. सर ये फर्स्ट साइटिंग लास्ट साइटिंग एक बार थोड़ा सा बता दो सर। बेटा इसमें कौन सी चीज क्लियर नहीं है आपको? अगर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट साइटिंग होगा तो उसका मतलब क्या होगा, मेरी ज्योग्राफिकल रेंज होगी वो? ओके ओके, अब आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोला लाइट हाउस इज फर्स्ट साइटेड, तो बेटा आपने बिल्कुल वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। मतलब आपने जीआर भी निकालनी है और आपने पीएलआर भी निकालनी है। दोनों में से जो भी कम होगी उसे आपने अपनी फर्स्ट साइटिंग या लास्ट साइटिंग रेंज ले लेना है। ओके ओके ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? वेरी